गुड इवनिंग। आज हम अपने इलेक्ट्रोस्टैट के डे वन यानी पहला क्लास जो है उसे हम पोस्ट कर रहे हैं आपको। और जो भी हमारा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है, जिससे हमारे मार्क्स जो हो बेटर हो। टू द पॉइंट आते हुए हम सीधे आज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, जो आपके क्लास 12th स्टैंडर्ड का पहला लेसन होता है, पहला टॉपिक होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली होता है। In the first hour, we will discuss about the electric charge. What is electric charge and how can we feel it in the daily life? There are so many daily life. अगर सपोज करिए कुछ सारे कपड़े होते हैं जिन कपड़ों से अगर आप, जैसे कि ये कॉलर है, इस कॉलर को अगर आप पकड़िए, देखिए कई बार बाल यहाँ जो है टच हो जाता है, जिससे खींचने में थोड़ा दर्द होता है। अगर हम कोई ग्लास का पेन लेते हैं, we take and we rub on a cloth and also with the hair, and the bits of the paper will attract and try to lift up. This type of the so many phenomena in the life, daily life, and we will connect them with the charge. It means if the such phenomena, cat fur and silk, so many examples in your textbook also it is mentioned. Give a physical presence of the electrified objects. It means that is they are called electrified, and this is known as the also body get charged. So point is, what is the charge? Since we know every atom is made of the proton, neutron and electrons. When we rub the two bodies, then from one body the some particles, later it will named as the electron. Some particles will transfer from one body to another body. Suppose let it is a body A and it is a body B. If body A comes and B, अगर हम ना इनके बीच friction करें, if there will be a friction, then a few particles will move from here to here. So which will get positive charge and which will get the negative charge. The some electrons is left from A, some electron is shifted to the transferred to the point B, and some electrons is transferred. So point is, what quantity is determining factor electron shift from A to B. The determining factor is the work function. Later we will discuss in the detail what is the work function. Work function, it is the minimum energy required to eject out the electrons from any surface. So A से इलेक्ट्रॉन, चूंकि A का वर्क फंक्शन कम है, इसलिए A से इलेक्ट्रॉन निकल के B में शिफ्ट किया। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गए, ट्रांसफर हो गया, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रॉन हायर है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और ये नेगेटिव गेन करेगा। अब पॉइंट ये है, द इलेक्ट्रिक चार्ज वी हैव डिस्कस्ड एंड नाउ मेथड ऑफ चार्जिंग। तो बेसिकली ना देयर आर so many points how the charge is decided and the friction it is. If we discuss about what is the method of charging, so there are the three methods of the charging. One is the friction, as I have discussed, two bodies rubbed to each other, then we will get it a friction, and another is get the induction. Induction means simple होता है कि दो बॉडी हो और एक बॉडी चार्ज है, लेट इट चार्ज Q, एंड अनदर बॉडी अनचार्ज है। तो अनचार्ज, इट इज अनचार्ज बॉडी है ये, और ये चार्ज बॉडी है। व्हेन दे कम्स क्लोजर, इट इज अ metal when it get closer but not in contact, then the opposite charge, like it is positive, then the negative comes near and positive comes like that. The charge arrangement is rearranged, and the unlike charge comes closer and out farther is the like charge. So this by agar suppose it is grounded, the positive charge will shift to the ground and only negative charge is remaining here and body get charged. And the third is the point is the conduction. It is a common, so if a body is charged and another body comes in contact, it is uncharged, let it is charged. Body A is charged and body B is uncharged. It was not earlier in contact, but it comes in contact, then this charge will also shifted to A. Means 2 point, friction, conduction.
इन दोनों में कांटेक्ट जरूरी है। इंडक्शन, नो कांटेक्ट नेसेसरी। सो देयर आर द थ्री मेथड्स ऑफ द चार्जिंग। पॉइंट है, अभी जो हम फ्रिक्शन की, इंडक्शन की, कंडक्शन की बात करते हैं, इन सब का एक मूल है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, दैट इज द कॉज ऑफ द चार्ज ऑन एनी बॉडी। इफ वी डिस्कस नाउ द third point, that is the property of the charge. The property of charge, basically there are three property of the charge. One is the additive, and other is the conservative, and third is the quantization. Point is additive. If the total charge on a body get added, they will be added. यहीं से एडेड से एक पॉइंट निकल के आता है कि चार्ज स्केलर है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ऐड होता है, पर ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं होता है, और ये न सिर्फ रोटेशन में बल्कि ये रिलेटिव मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ये जो है इनवेरिएंट होता है, स्केलर होता है। जबकि हम अगर एग्जांपल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशन में तो इनवेरिएंट स्केलर होता है, लेकिन यही फेनोमेना वो रिलेटिव मोशन में काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाता है। फिलहाल हम चार्ज पर बात करें तो ये एडिटिव मींस टोटल चार्ज विल बी एडेड। मान लीजिए आपके बहुत सारे हैं ना, मेरे दोनों पॉकेट में 4-5 पॉकेट है, सब में पैसे हैं, और हमने पूछा कितने पैसे, तो सारे पैसे को ऐड कर लेना है। हम साइन के साथ ऐड करेंगे, साइन मींस जो हमारा एल्जेब्रिक सम होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है टोटल चार्ज गेट कंजर्व्ड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रैक्ट। यानी हमने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डेली लाइफ का अगर हम ले लें, तो हम अगर दो बॉडी को जब हमने फ्रिक्शन किया था तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर इससे इधर शिफ्ट हुए, तो अभी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। किसी भी एक और केस ले लीजिए, हम लोग केमिस्ट्री का एक केस ले लेते हैं, Na+Cl- and it is also NaCl, the net charge is 0, 1+ and 1-, it is also 0. So the conservation of the charge valid in the daily life in the physical nature. And now one is the quantization. Quantization मतलब integral multiple of any fixed amount. तो ये जो किसी भी बॉडी पर चार्ज होता है, ये जो है ये एडिटिव में, सॉरी दिस इज द सिग्मा आई, टोटल चार्ज ऐड होगा, दैट इज Np। N इज द इंटीजर, यह हमारा इंटीजर है। हमारा E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब क्वांटाइजेशन के लिए मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, वो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, या 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन होगा, बट दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। पॉइंट इज this quantization has a very important role. It is not valid in macroscopic case. Macroscopic case पे ये वैलिड नहीं है, क्योंकि चार्ज में जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम वहां उसे कंसीडर नहीं कर पाते, इग्नोर कर देते हैं। जबकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये कंसीडर्ड होगा और यहाँ ये कंसीडर नहीं होगा। और ये थी आपकी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इन द नेक्स्ट क्लिप we will discuss about the Coulomb's law and superposition principle। हमारे इन सारे लेक्चर्स को समझने के लिए, देखने के लिए आप पहले YouTube पर जो हमारा ये चैनल है इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और हम फिर मिलते हैं अगले क्लिप पे। थैंक यू।